तो आज हम शुरू करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवेरिएंट सबस्पेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी, लेट V बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस ओवर ए फील्ड F एंड T V टू V बी ए लीनियर ऑपरेटर। सो T V टू V एक लीनियर ऑपरेटर है एंड W बी ए T इनवेरिएंट सबस्पेस ऑफ V। W T का इनवेरिएंट सबस्पेस है, मतलब कि T ऑफ W कंटेंट्स इन W। देन वी हैव टू शो दैट W बार इज T स्टार इनवेरिएंट सबस्पेस ऑफ V। हमें W बार को T स्टार इनवेरिएंट सबस्पेस दिखाना है V का, मतलब कि T ऑफ W पर T स्टार ऑफ W पर कंटेंट्स इन W पर, ये हमें दिखाना है। सो सॉल्यूशन, वी हैव V इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस ओवर द फील्ड F and T V to V is a linear operator and W is T invariant subspace of V. So we have T of W contains in W because W is a T invariant subspace of V. Now let U belongs to W पर। हमने ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट पहले से ही पढ़ रखा है। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ P इज डिनोटेड बाय P पर, जहाँ पर P पर इक्वल्स टू बीटा बिलोंग्स टू V सच दैट इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू P होता है। ओके, सो therefore inner product of U comma beta equals to 0 for all beta belongs to W, जहाँ पर बीटा W पे बिलोंग करेगा। ओके, दिस इज जस्ट बाय डेफिनेशन दैट इम्प्लाई U comma T of alpha equals to 0 for all alpha belongs to W। अभी ये कैसे हो गया? Since alpha belongs to W, therefore T of alpha belongs to T of alpha belongs to T of W। ओके, अभी T of W जो है वो W पे कंटेन करता है। दैट इम्प्लाई T of alpha also belongs to W। So we can write inner product of U comma T of alpha equals to 0। That imply T star of U comma alpha equals to 0 for all alpha belongs to W। प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट ऑपरेटर, डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था? अगर T V टू V लीनियर ऑपरेटर है देन द एडजॉइंट ऑपरेटर T स्टार इज डिफाइंड बाय T ऑफ U कॉमा V इनर प्रोडक्ट ऑफ T ऑफ U कॉमा V इक्वल्स टू U कॉमा T स्टार V, जहां पर U और V दोनों ही V के मेंबर है, वेक्टर स्पेस V के। ओके, सो दैट इम्प्लाई T स्टार ऑफ U belongs to W पर, thus T star of W पर contains in W पर। that imply W पर is a T star invariant subspace of V। Now the second property, let T be a normal operator on an inner product space V over the field F, then we have to show that T minus lambda I is a normal operator for lambda belongs to F। ओके, सो T is a normal operator जिसे हम ऑर्थोगोनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। सो वी हैव T is a normal operator on an inner product space V over the field F। therefore we have T into T star equals to T star into T, because नॉर्मल ऑपरेटर का डेफिनेशन ही होता है T इंटू टी स्टार इक्वल्स टू टी स्टार इंटू टी। नाउ वी हैव टू शो दैट T माइनस लैम्डा आई इज ए नॉर्मल ऑपरेटर। सो वी हैव टू शो दैट T माइनस लैम्डा आई इंटू T माइनस लैम्डा आई स्टार इक्वल्स टू T माइनस लैम्डा आई स्टार इंटू T माइनस लैम्डा आई। ओके, सो नाउ T minus lambda I into T minus lambda I star equals to T minus lambda I into T star minus lambda bar I star, क्योंकि we know that K into T star K into T whole star equals to K bar of T star, जहाँ पर K फील्ड में बिलोंग करता था। ओके, यहाँ पर लैम्डा भी F का मेंबर है। सो
lambda bar into I star, that is equals to t minus lambda I into t star minus lambda bar I, because I star इक्वल्स टू आई हमने एडजॉइन ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज में ये प्रूव किया था। दैट इज इक्वल्स टू टी स्टार माइनस लैम्डा बार टी इंटू आई, हमें पता है टी आई इक्वल्स टू आई टी इक्वल्स टू टी, क्योंकि आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस लैम्डा टी स्टार प्लस लैम्डा बार into I. This is equals to t star t minus lambda t star minus lambda bar t plus lambda bar I. Now t star is common, t minus lambda I minus lambda bar I, t minus lambda I. This is equals to t star minus lambda bar I into t minus lambda I, that is equals to t minus lambda I whole star into t minus lambda I. So हमें यही शो करना था, hence t minus lambda I is a normal operator. Now the third property, let T be an orthogonal operator on an inner product space V over the field F and lambda be an eigenvalue of T. Okay, then we have to show that mod lambda equals to 1. So we have T is an orthogonal operator on an inner product space V over the field F and lambda is an eigenvalue of T. Therefore t into t star equals to t star into t equals to I, because normal operator and orthogonal operator are same. Let V be an eigenvector of t with respect to lambda. Then by definition we can say that t of v equals to लैम्डा भी, जहां पर v नॉट इक्वल्स टू 0 होगा. नाउ वी हैव टू शो मॉड ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू 1. सो लैम्डा इंटू लैम्डा बार इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ v कॉमा v इक्वल्स टू लैम्डा बार इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ v कॉमा लैम्डा v, दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा v कॉमा लैम्डा v by the properties of complex inner product equals to t of v comma t of v, that is equals to v inner product of v comma t star of t of v by the property of adjoint operator, that is equals to v comma I of v, क्योंकि हमें पता है t star t equals to t star equals to I. This is equals to v comma v, because I of v equals to v होता है. That imply lambda bar equals to 1. Okay, because v not equals to 0 है, therefore inner product of v comma v is always greater than 0. That imply modulus of lambda square equals to 1. Then we can say that mod lambda equals to 1.